Hello, welcome to the platform of Chronicle IAS. My name is Prakash Upadhyay, and now today we are going to deal the section of UP's Geography, Environment and Ecology. So without wasting of any time, we are come to the topic. This is paper 6, mock test 1, and the question is that evaluate the impact of ecotourism in Uttar Pradesh National Park and Wildlife Sanctuary. Okay. Look at the question. This is the question number 3, which talks about evaluate the impact of ecotourism in उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हिंदी में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में पारिस्थितिक पर्यटन इको टूरिज्म के प्रभाव का मूल्यांकन करें. Okay, now we are come to the topic that how we can approach this question. How we can approach this question. There are 3 type of demand in this question. 3 type of demand, it means you have to well known or well familiar, well understood about what is eco tourism. What is ecotourism? What is ecotourism and what is the concept behind the ecotourism? Second one is you have to understand what is the UP government's policy on promoting ecotourism. You have to familiar with this. And third requirement is you have to understand what is national park, and what is wildlife sanctuary, because in this question answer session we are not going to deep dive into what is ecotourism, what is the wildlife sanctuary, what is national park. We are not going to deal with this because it is only deal when the classes will be held. Okay, now we are going to approach this question with starting with the definition of ecotourism. What is ecotourism? The tourism which promotes natural conservation, wildlife conservation, and it generates any kind of economy from national park, wildlife sanctuary, wetlands, any kind of economic generation, any kind of economic employment or economic income from the national park, wildlife sanctuary is called ecotourism, which promotes the economic wealth in the national park through the ticketing, through the tracking, through the environmental guidance providing by the person. तो वेरियस टाइप इनकम से, जो इको टूरिज्म के इनकम से मतलब नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो इनकम आ रहा है उसी को हम इको टूरिज्म कहते हैं, क्योंकि उस इनकम से हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, उसके अंदर जो स्पीसीज रह रही हैं उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ काम करते हैं. तो इको टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल conservation and sustainable tourism, sustainable traveling and conserve the species and wildlife. तो क्या बोल रहा है? इको टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल ट्रैवलिंग that supports the conservation of
natural environment as well as the species and wildlife, etc. Because through the ecotourism we can develop the economic activities, like कोई आदमी नेशनल पार्क में जा रहा है, टिकट ले रहा है, खाना खा रहा है, वहाँ पर टूरिस्ट गाइड को हायर कर रहा है, तो इससे जो भी इकोनॉमी जनरेट हो रही है वो सब क्या बोलेंगे, जिसको हम इको टूरिज्म बोलेंगे. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन आस्क evaluate the impact of ecotourism in the Uttar Pradesh National Park and Wildlife Sanctuary. So now we are come to the topic, what is the impact? And impact can be both positive and negative. So firstly we are going to discuss what is the positive impact of ecotourism in Uttar Pradesh. The first is, because of ecotourism, the earning which is come from ecotourism is helping to the environmental conservation. The first thing is the income which generates from the ecotourism is helping for the environmental conservation. So what is environmental conservation? It means increase. अब environmental conservation कैसे कर सकते हैं? When we increase the awareness and funding come from ecotourism, so increased awareness and funding through the ecotourism. By if the ecotourism reach the awareness about the wildlife environmental issue, increase the, you can say that the increased support for the conservation through the income which generates from the ecotourism. Next क्या हो सकता है? Revenue for national park wildlife sanctuary maintenance. Revenue for, second चीज क्या है? Revenue for maintenance. कि भाई नेशनल पार्क में हम जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं, उसमें लाइट खराब हो गई, उसका अपना एक खर्चा है उसके मेंटेनेंस का, जो एनिमल्स रह रहे हैं, स्पीसीज रह रहे हैं, उनको फूडिंग फॉडर ये सब प्रोवाइड कराया जा रहा है. आखिर में इसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट चाहती है कि वी प्रमोट द इको टूरिज्म, बिकॉज गवर्नमेंट doesn't want any kind of unnecessary burden which taken on the इकोनॉमी ऑफ यूपी ना. इसलिए वो चाहते हैं कि वहीं से सस्टेनेबल तरीके से सेल्फ रिलायंट हो नेशनल पार्क, इसलिए यूपी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द इको टूरिज्म. नेक्स्ट क्या हो सकता है? रेवेन्यू फॉर पार्क मेंटेनेंस, और यू कैन से द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थ्रू दी फीस टूरिस्ट गाइडर, कई बार मैंने बता दिया. नेक्स्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. थर्ड चीज क्या है इको टूरिज्म से? बायोडाइवर्सिटी protection. We all are know that through the ecotourism there is a protection of biodiversity, because we are maintaining the core zone, we are making buffer zone, and all the activities are prohibited in the core zone. तो ये भी हम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Through the ecotourism we can increase the socio-economic development of the area. The second one is socio-economic development. Under the socio-economic development, it is a main source of employment generation for the local peoples. How? Employment generations. Under this, suppose that, like I give you the example of Dudhwa National Park. Dudhwa National Park in UP. Tharu tribe is the tourist guider. Tharu tribe is a tourist guider. Tharu tribe is the traveler and tourist guider. Not only the tourist guider, Tharu tribe is also
making some cottage and houses involving in the caring of animals, and they are also telling us the people how we can build the friendly environment with the wildlife animals. So it is a main source of employment generation, which reduce the burden of employment for the government, because ecotourism develops the also the employment generation. Next, community involvement. It also involved the community. The second one is community involvement. Community involvement. Local community involvement, because we all are know that, because without involvement of community, ecotourism, the sustainable ecotourism, the concept of sustainable ecotourism cannot be handled very easily. So involving the locals in the ecotourism project, enhancing the livelihood opportunities in the local peoples, they cannot wander for the other employment sections, और यू कैन से दैट कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए. नेक्स्ट क्या हो सकता है? सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स. सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स. सपोर्ट फॉर द art and craft which are locally, art and craft which are locally which have the local importance. If someone is traveling in any national park and wildlife sanctuary, they are also purchasing, they are very much interested to purchase the indigenous crafts. So it is also a positive impact. Next one is the infrastructural development. Infrastructural development. Infrastructural development. Infrastructural development. We all are know that in the national parks, improvements of roads, communication networks, sanitation, hospitality services in the remote areas surrounding the park, like Nawabganj Bird Sanctuary, Dudhwa National Park, Sohingi Barwa वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है कि ताकि लोग वहां तक पहुंच पाए. मतलब रोड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेटर हुई, होटल्स, कॉटेज, देर आर सो मेनी ऑनलाइन नेटवर्किंग एज वेल. तो इस तरह की चीजें भी वहां पे डेवलप हो रही हैं. नेक्स्ट क्या हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अलावा? कि नेक्स्ट चीज हो सकती है, यहां पे हम देख सकते हैं कि इट विल ऑल्सो बैलेंस द इकोलॉजी. इकोलॉजी पे बैलेंस करता है, इकोलॉजी एंड मेंटेनिंग द बायो डाइवर्सिटी. एंड इट ऑल्सो इज द ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन कैप्चरिंग. कार्बन कैप्चरिंग भी करता है. अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्या है? द निगेटिव इम्पैक्ट्स. निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका भाई? तो निगेटिव इम्पैक्ट में हम देखेंगे तो पहला तो ये है कि देयर आर चांसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू द if you can say that the summer season, this is the peak season of traveling national park, because एग्जाम ओवर हो गए हैं, बच्चे जा रहे हैं. तो वहाँ क्या होगा? देयर आर हाई चांस ऑफ पोल्यूशन. तो ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन, overcrowding and pollution, because in the peak season there is some time where there is a congestion in the national park, which will harm the ecological setting of that particular national park or wildlife sanctuaries. Second one, it is under the environmental degradation. The second thing is harming
the harming the ecosystem of that area through the noise pollution. हार्मिंग द इकोसिस्टम थ्रू द नॉइस पोल्यूशन. कैसे क्या नॉइस पोल्यूशन हो रहा है? बहुत सारी गाड़ियां जाएंगी, लोग अलग अलग पिक्चर लेंगे, तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो वाइल्ड लाइफ होता है दे आर इन द सिचुएशन ऑफ अनकंफर्टेबलनेस में आ जाते हैं. दे आर मोर एग्रेसिव समटाइम्स, अटैकिंग इनटू द टूरिस्ट. ये सब भी हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस इन वाइल्ड लाइफ आ जाता है. एंड वाइल्ड लाइफ्स आर नॉट वेरी मच फैमिलियर विद द व्हीकल नॉइस. व्हीकल के नॉइस से फैमिलियर नहीं होते. एंड सम टाइम दे आर नॉट फैमिलियर विद द ह्यूमन प्रेजेंस. एंड लाइट पोल्यूशन डिस्टर्ब द एनिमल बिहेवियर एज वेल एज द इकोलॉजिकल कंसर्न. एंड द ब्रीडिंग पैटर्न भी उनका एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है. नेक्स्ट क्या हो सकता है? प्रॉफिट ओवर दी कंजर्वेशन. प्रॉफिट ओवर द कंजर्वेशन मतलब there is a high chances of income from the ecotourism. It can be captured by the private players, and the chances of corruption is too high. ये भी हो सकता है. नेक्स्ट, inadequate benefits भी क्या है? लिमिटेड लोकल बेनिफिट्स हैं. inadequate benefit को बोलते हैं the benefit is which not sufficient. inadequate benefits. What does it means by inadequate benefits? The benefits which are not sufficient for the development of locals. Like मान लो लोकल जो लोग हैं उनके लिए सबसे पहले बता रहा हूं कि लोकल जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए उतना नहीं हुआ. ठीक. उसके साथ साथ नेक्स्ट, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन. जैसे मान लो सपोज दैट कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब थारू ट्राइब को ले लेते हैं. थारू ट्राइब. What is the chance of cultural exploitation? Because of mispresentation and commodification of local culture for the tourist consumption. मिसइंफॉर्मेशन दे दिया, कह रहे थारू जाति के साथ ऐसा है वैसा है, और खूब अजीबोगरीब इंटरेस्टिंग सी कहानी बता दी, और उससे या कुछ कोई हैंडीक्राफ्ट बनाया और उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है लोकली, पर उसे सेल कर दिया फॉर द ओनली द पर्पज ऑफ बेनिफिट. तो ये. और दूसरी चीज क्या हुई थी, हमने देखा था कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, मतलब जितना लाइवलीहुड जनरेट करना था, जितना एम्प्लॉयमेंट इससे सोचा गया जनरेट होगा उतना नहीं हुआ. अब कह रहा है देयर आर सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द जनरेशन ऑफ, यू कैन से दैट, प्रमोटिंग द इको टूरिज्म. क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने? यूपी गवर्नमेंट की फॉरेस्ट पॉलिसी है 2024, एम्फेसाइज ऑन इको टूरिज्म एज द टूल ऑफ कंजर्वेशन of rural development as well as the employment generation. Development of eco-sensitive zones. Eco-sensitive zone को भी develop करें to balance the tourism with the environmental integrity. ये भी ध्यान में रखना है. There are some recommendation as well. इस question में आपको some recommendation भी डालना है. There are some recommendation for the sustainable ecotourism. Sustainable ecotourism कैसे हो सकता है? When you are monitoring well through the AI, through the technology. Second one is you develop surrounding the green infrastructure. What does it means by green infrastructure? Like promoting solar energy, wind energy, और इको फ्रेंडली एकोमोडेशन, जैसे टिम्बर के रूम्स बनाओ वहां पे. ठीक. और क्या है? बैन द प्लास्टिक विच हार्म्स, एंड वेल मैनेज्ड इकोसिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम को डेवलप करो. इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करो. इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेटिंग द इको अवेयरनेस प्रोग्राम्स. कुछ इको अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराइए. कम्युनिटी एम्पावरमेंट. देयर इज अ मॉक ड्रिल एंड वीकली मॉक ड्रिल कीजिए और वीकली मास कम्युनिकेशन कीजिए लोकल लोगों से कि हाउ वी कैन इनोवेट, हाउ वी कैन विदाउट harming the ecology and ecological balance, we can generate new type of interest in national parks. Okay, now we are going to discuss conclusion of this question. Conclusion क्या discuss कर सकते हैं भाई? What is the conclusion? The ecotourism
in UP have high potential, have high potential high potential, but it cannot, it can't, it cannot sufficiently and properly used, so that the policy of UP government is providing holistic vision which can meet the target with इंडियाज ठीक। आप ऐसे कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि इको टूरिज्म इन यूपी is UP's National Park and Wildlife Sanctuary has contributed the conservation and livelihoods, but it must be carefully managed and avoid the ecological challenges which can harm the ecological balance. ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन का अप्रोच रहा। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 number question. Look at the question. Critically analyze the key objectives. Critically analyze the key objective. Critically analyze the key objective and features of the Uttar Pradesh new forest policy. उत्तर प्रदेश नवीन वन नीति के मुख्य उद्देश्यों और विशेषताओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। Critically analyze. This is the tail word which talks about so many things. Critically analyze करना है। What does it means by critically analyze? Critically analyze का मतलब है कि you are not looking upon only the positive things, as well as you can also raise the limitations, expose, or you can say that present some limitations of the policies. Okay. So critically analyze the key objective and features of the Uttar Pradesh new forest policy. So just simply we are going to deal with the section that what is the intro of the this question. क्या है intro इस question का, क्या intro हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, यूपी's latest policy framework 2017 provided a holistic approach for aiming to the sustainable and ecological balancing. So UP's latest policy framework 2017 provided the holistic approach for aiming to the sustainable and ecological balancing, as well as helping in achieving the national aim. Okay, this is all about the intro. You can also write down different intro, like Uttar Pradesh latest
forest policy framework involving from its 2017 forest policy, reinforced by a recent 2014 and 15 initiative, adopts a holistic approach balancing ecological integrity, climate resilience and inclusive development. Now we are moving towards the core objective of the question through main body. What is the core objective of this forest policy? What is the core objective? What is the core objectives of this? What is the core objective? There are so many core objectives like expanding and improving the forest and tree cover, expanding the forest and tree cover. And what is the target? To achieve its 15%. Okay. Now the next one is enhancing the ecosystem and maintaining the biodiversity conservation. Enhancing the ecosystem and balancing the biodiversity conservation. You have to explain, but in this question you have not enough space to explain more things. Next, reclaimed, degrade and non-forest land. Reclaimed, degraded and non-forest land. The next one is, you can say that integrated social and agroforestry. Integrated social and agroforestry. Integrated social and agroforestry. Now it also involves the community centric governance. Community centric governance. कम्युनिटी सेंट्रिक गवर्नेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब स्ट्रेंथनिंग द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विथ लोकल पीपल्स के साथ स्ट्रेंथनिंग करना है, जो है जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क ये है, ठीक ना. उसके साथ साथ क्लाइमेट मिटिगेशन एज वेल एज सॉइल कंजर्वेशन. क्लाइमेट मिटिगेशन बिकॉज वी आर फेसिंग क्लाइमेट चेंज, सो क्लाइमेट mitigation, soil, water and air conservation. This is the objective of this forest policy. Carbon credits and ecotourism. It also promotes carbon credit amongst the state, or sorry, within the state. It promotes carbon credits and ecotourism. Okay, now it also promotes scientific planning and monitoring. It also promotes scientific planning and monitoring. Okay. It also promotes anti poaching activity. It also control man and wild conflicts. It also talks about the green belt as well. There are some key
key initiative taken from this policy, like village level green chopal and gram one. This is the concept under this philosophy you can inculcate in your answer. Upvan urban mini forest. Upvan urban mini forest. These are the policies you can just note it down. Agroforestry drives. There are so many agroforestry drives are you can say that initiated by the UP government. Agroforestry, pushing agroforestry, and there are some certain governance reform for the clearance, for the budgeting, for the allocation of the budget for agroforestry and social forestry, or also promoting the audit and monitoring, audit deposits and monitoring, also promoting carbon credits and ecotourism, which we have also mentioned that there are some weakness of this policy as well, which we have critically analyzed, like implementation gaps. The gap of implementation gap, which revealed by the CAG report. So implementation gaps. What is the implementation gap? Like according to the CAG report, highlight over statement of plantation and actual forest are declines. Over presentation, over statement कि हमने 5 करोड़ पेड़ लगा दिया, ठीक. Survival versus number. There are very less number of trees and plants are surviving, but there are more number of plants and trees are presenting कि इन्होंने survive कर लिया. Resource constraint, मतलब सक्सेस डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंट फार्मिंग एंड वाचिंग. जो पेड़ लगाया उसको पानी भी चाहिए, वो भी है. बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क ऑफ इनइक्विटी इन द फार्मर्स और इन द कम्युनिटीज विच आर इन्वॉल्विंग इन दिस, ठीक. अब रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए? देयर आर हाई चांस ऑफ करप्शन एज वेल. व्हाट आर द रिकमेंडेशन? What are the recommendation to improve the survival and monitoring? What are the recommendation? क्या क्या recommendation होना चाहिए भाई? तो पहला recommendation है improve the monitoring and survival of the plants एंड ट्रीज. क्या करना है भाई? हमें देखना है कि उनका सर्वाइवल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने इतना पैसा लगा दिया. नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंश्योर द कम्युनिटी गेन्स. वी आर फोकसिंग ऑन द ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू अर्निंग. जो भी ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू अर्निंग हो रही है वो मिले लोगों को. एम्पावर द विलेज इंस्टीट्यूशंस एंड मेकिंग द विलेज एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ फॉरेस्ट एज वेल, इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज. तो ये आपको लिख सकते हैं. क्लोज प्लानिंग एंड एजुकेशन लूप होल्स. जो भी एड्रेस द कैग फ्लैग्ड जो गैप्स हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि टाइमलाइन का गैप है, अकाउंटेबिलिटी का गैप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का गैप है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये सब देखना है, ठीक. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? डिस्पाइट ऑफ ऑल दी थिंग्स we can say UP's forest policy address all the issues as well as future planning. We just need to implement with open eyes. क्या है? खुली आंख से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि कैग ने जो कमी बताई है वो हम लोग
कर पाए। ऐसा नहीं कि हर बार नई पॉलिसी लाना है, ये आपको आंसर में नहीं लिख देना है कि वी नीड अ न्यू पॉलिसी, वी हैव टू इम्प्लीमेंट विथ ओपन आईज, कोई हवा हवाई बातें ना रहें। थैंक यू। वी आर मूविंग फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर in UP, its impact on agriculture, its impact on agriculture productivity। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन करना है, बताना है उत्तर प्रदेश में सिंचाई अवसंरचना की स्थिति क्या है और कृषि उत्पादकता पर उसकी प्रभाव की समीक्षा करना है, एग्जामिन करना है। ठीक, ओके। सो व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इन दिस क्वेश्चन, किस तरह का रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इरिगेशन स्टेटस, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देखना है, ऑन हाउ इट इम्पैक्ट्स द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कैसे वो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि यूपी have largest population, UP have largest population to feed the largest population. UP needs better irrigational facilities. UP needs better irrigational facilities because UP have the largest population, and we all are know that UP is a agrarian economy. UP is the state of agrarian economy. Okay, now there are four major irrigation infrastructure in UP. One is canal irrigation. Why canal irrigation? Because we all are know that UP lies under the great Gangetic plain, easy to plug and easy to dig, and that's why the canal irrigation has been developed. The second one is a groundwater associated irrigation, like tube well irrigation, and well irrigation. The third one is sprinkler irrigation, and fourth one is, you can say that, drip irrigation. In certain areas there is canal irrigation as well, वो भी फेमस है, पर यही जो इम्पॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम है, ये यूपी का इरिगेशनल स्टेटस है, इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस है. Some major canal irrigation system you have to mention, like Upper Ganga Canal, Lower Ganga Canal, Saryu Canal Project and केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. ये सब आप बातें इसमें बता सकते हो, मतलब इन सब के बारे में बता सकते हो थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ इरिगेशन सिस्टम impacts the agricultural productivity. So we all are know that agricultural productivity is largely depend upon the irrigational facilities, because any crop
cannot be grown without the water supply on time. So if UP is wanting more strengthening and more higher agricultural productivity, it means UP firstly strengthening the its irrigational facility. So the first is with 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 proper availability of irrigation, it will increase the cropping intensity of UP, because UP have highest population, so UP must have increased its cropping intensity to use 1 hectare land in a multiple time in one span of year. And now UP's cropping intensity is more than 160%. Second one is stabilizing the yields. Stabilizing yields का मतलब क्या है भाई? Stabilizing, the second one is stabilizing the yield. What does it means by stabilizing the yields? Reason with assured irrigation. Like we all are know that there is a erratic nature of monsoon, and because of erratic nature of monsoon, the crops are in UP, the crops are highly dependent on the erratic nature of monsoon. If the irrigational facilities are properly developed, then the production fluctuation, the grains production fluctuation cannot happen. The third one is, if the proper irrigation, or you can say that if cropping intensity is increased and irrigational facility is available, then the crop diversification is possible. Crop diversification is possible. What does it means by crop diversification? Multiple type of cropping. Irrigation allows farmers to grow vegetables, not only the monoculture, because if we are totally dependent on the erratic nature of monsoon, then we are in the hand of monsoon. In the hand of monsoon का मतलब क्या है? उसी के according करेंगे. If the irrigational facilities are properly developed, it means crop diversification can be possible. Next one is reduction in the rainfall dependency. The fourth one is reduction on the rainfall dependency. Reduction on the rainfall dependency. Rainfall dependency. It means कि if the irrigational facilities are properly developed, so we are less dependent on the high fluctuating nature of monsoon. So ये impact है. What are the challenges of irrigation? What are the challenges? क्या challenge है ये भी थोड़ा सा यहीं पे हमें बताना पड़ेगा कि what are the challenges. तो first challenge क्या है? Because of too much popularity of tubewell and well irrigation, because of this reason there is a over exploitation of ground water depletion. Second was is because of over irrigational facilities like canal irrigation, it will lead to the condition of soil erosion, as well as it carry so many pesticides, herbicides and urea away from the क्रॉपिंग फील्ड, क्योंकि भाई इसमें क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता. थर्ड वन इज क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल एंड इक्विटी कंसर्न्स लाइक वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल possibility of soil is unhealthy, ये हो सकता है. एंड थर्ड वन इज इट डिमांड्स हाईली इलेक्ट्रिसिटी लाइक ट्यूबवेल, ठीक, तो ये भी है. और इट विल बर्डन ऑन
फ्यूल, भाई डीजल है, पेट्रोल है, इट विल ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये बहुत सारी बातें आप कर सकते थे इसमें। और इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं कंक्लूजन में, इसके कंक्लूजन में यू कैन राइट डाउन यूपीज irrigational facilities are enough to feed its population, but to ensure the soil productivity, UP needs some modern techniques for the irrigation with sustainable soil as well as environment। तो आप इस तरह का कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका अप्रोच है। थैंक यू। सेक्शन 20 क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स एंड विंध्यन रीजन in shaping the relief and structure of the Uttar Pradesh. Discuss is a tail word. The significance of Gangetic plain is a primary keyword of the question, and Vindhyan region is shaping the relief and structure of Uttar Pradesh. हिंदी में क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप और संरचनाओं को आकार देने में गंगा के मैदानी क्षेत्र और विंध्य के क्षेत्र के महत्व की चर्चा कीजिए। ओके, तो मतलब क्या है भाई इस क्वेश्चन का? Question needs or the requirements of the question demands the understanding of two things. One is understanding of Gangetic plain and the importance of Gangetic plain, and understanding of Vindhyan range, Question demands two things. Okay, now we are starting with UP is the fourth largest state in India with huge population. The distinguished features of this states hide in two primary features. One is Gangetic plain and second one is Vindhyan region. देखो, ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश के बारे में दो ही चीजें हैं। एक क्या है, वो गैंगेटिक प्लेन में है, और दूसरा उसके साउथ में विंध्यन रीजन है। नाउ वी आर वन बाय वन टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच Gangetic plain.
What is the importance of Gangetic Plain? Talks about Gangetic Plain, the location. We all are know that 75% part of UP is covered by 75% part of UP is covered by Gangetic Plain. Is it okay? And it is formed by the alluvial soil which transported by the different rivers which deposited into the synclinal basin, which later on converts into the plain. Okay, now there is a three division of Gangetic Plain in UP. One is upper Gangetic Plain, the second one is middle Gangetic Plain, and third one is lower Gangetic Plain. You can also mention the location and the area of upper Gangetic Plain, lower Gangetic Plain, and middle Gangetic Plain. Okay, now what is the significance of this relief structure? One is it is almost flat and low lying areas, and that's why trade and transport can easily throughout all the districts of UP. They are easily connected throughout each other. क्यों? क्योंकि लो लेइंग एरियाज हैं, ठीक, जेंटल स्लोपिंग है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट. ओके, और its elevation is varies between 150 to 300 meters above the sea level, and because of this reason it is densely populated. Because it is formed by alluvial soil, it means there is a high fertility in this, and that's why it is densely populated, and the settlements are very close and compact. Next one is high fertility. Second one is high fertility in the soil, which led to the condition of why UP is leading amongst the leading countries of amongst the leading states of wheat production, of wheat and rice, sugarcane and potato, because it is a fertile land. Next one is, you can see that here the main crop is wheat, rice and sugarcane. Next one is rich drainage. Third one is rich drainage, which gives the advantage of UP. Rich drainage and network gives the advantage of UP for the irrigational facilities throughout the year. Next, flood plains and tarai belts. Fourth reason is flood plains and tarai belt. We all are know that the tarai belt is the region of water logging, but it is most fertile, and flood plains are carrying every year the new layer of the alluvial soil, which increase the productivity of UP's Gangetic Plain. Okay, next one is economic and cultural importance. We all are know that in the colonial past history, it is the site of ancient civilization and the center of modern economic hubs. Like ancient civilization में क्या है भाई, तो यहाँ पर बहुत सारा ancient civilization के हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी एक्टिविटीज मिले हैं, न्यूलिथिक साइट्स भी मिले हैं. हमने मौर्यन एम्पायर से लेकर गुप्ता एम्पायर के बीच में भी यहाँ देखा है. हमने देखा है कि क्यों यहाँ पर ही सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन है, बिकॉज द फूड सिक्योरिटी इज द मेन बेसिक फीचर ऑफ गैंगेटिक प्लेन.
बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं यहीं पर जिनका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, लाइक प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर. ओके, नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज Vindhyan region. We all are know that the Vindhyan region is a part of peninsular India. It is a part of peninsular India and it is made up by old crystalline sedimentary rocks, thick, and its origin is from the accumulation of sands, accumulation of deposits, ocean deposits, accumulation of ocean deposits, and that's why it have so many variety of minerals like sandstone, limestone, pyrite, marbles. There are pyroclast, fire clay. There are so many minerals found in the Vindhyan range. Okay, now the significance, or you can say that the importance, it act as a watershed, it act as a water divide, it act as a division of north and south. From Vindhya's south, it is called peninsular India. From Vindhya's north, it is called Gangetic plain in northern India. It also act as a barrier for the division of river drainage pattern from northern and southern. Okay, what is the geological importance? Geological importance, it have the various variety of minerals like sandstone, limestone, bauxite, granite, uranium, gold, some deposits of gold as well. Natural barrier and the climatic barrier, as we mentioned, it is a southern boundary, act as a boundary between north and south. Limited agriculture, because here it is a made up by old ancient crystalline as well as sedimentary rock. It is hard to cultivate. ठीक. Next क्या है? Hydrological importance. There are few number of dams built on this area. One is Rihend and second one is Govind Vallabh Pant Sagar Dam, which built on Son River. Okay, now we are concluding this. Conclude कैसे कर सकते हैं भाई? We are saying that UP's most of the economic activities, UP's most of the economic activities is surrounded by Ganga या Gangetic plains, and that's why Gangetic plain is a backbone of UP's economy, as well as the mineral resources come from Vindhyan region. Though it have less fertile lands, but it have the area of mineral rich, so that it gives the combined and the holistic picture of UP, which provides fertile soil as well as the minerals both. ऐसा कुछ करके आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में. एक यूपी का मैप भी बनाना है. थैंक यू.
Next section B is question number 12. Examine the potential of hydro and wind energy in Uttar Pradesh. What policy intervention are required to maximize the contribution of the state energy sector? हिंदी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत और पवन ऊर्जा की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए, राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में इनके योगदान को अधिकतम करने के उपाय सुझाइए। ठीक, बताइए। तो क्या कह रहा है, पहले में टेल वर्ड को पकड़ते हैं। ये है टेल वर्ड, पुछल्ले शब्द। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो एंड विंड एनर्जी इन उत्तर प्रदेश। व्हाट पॉलिसी इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स एनर्जी सेक्टर। मतलब यहाँ क्वेश्चन डिमांड सम काइंड ऑफ सजेस्टिव मेथड्स, सजेशन दीजिए। ठीक, तो हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन? तो फर्स्टली we are starting the intro with this very simple. UP have largest population and a rapid growing demand of energy. Traditionally UPs relies on coal based thermal power plants, but with the change in climate, UP needs to think and move forward to the renewable energy. Thick, and that's why UP must increase its capacity of renewable energy like wind energy and hydroelectric energy. Now the current status of the energy of UP hydropower, current status of hydropower energy. What is the current status? We all are know that Uttar Pradesh has limited large hydropower potential because UP is lying in the flat plain area. So UP have its limited hydropower potential because of its physiography. Okay, now as per the 2024 data, UP's hydropower potential is 502 megawatt, which is very less on as compared to on those states which have the physiographic advantage. Now UP have also some small hydro power projects which have the capacity of 25 megawatt generation, but it is also very less capacity. Okay, now we all are know that what are the challenges to increase the hydropower potential. The first challenge is UP have more than 75% areas lies in the plain area, Gangetic plain area, flat terrain है, इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक लार्ज पोटेंशियल नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल कंसर्न. Because building the hydropower potential, we need to cut the huge amount of trees which can lead to the condition of environmental loss. The third one is the seasonal flow of water. Seasonal flow
or variation in the erratic nature of monsoon, and that's why the sufficient amount which requires for the hydroelectric generation is in the state of fluctuation or the state of dilemma. So now the second thing in this question is wind production. Wind energy प्रोडक्शन एज वेल एज पोटेंशियल. क्या है इसका पोटेंशियल? तो हम कहेंगे यूपी लैक्स इन द विंड प्रोडक्शन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफिक disadvantage. UP have lacks of significant wind energy development unlike the coastal areas because of its physiographic disadvantage. Despite of this, wind resource assessment by the MNRE shows the moderate potential in the UP state have in the region of Bundelkhand and the Vindhyan region. Okay, in the region of Mirzapur and Lalitpur, Chitrakoot, Bada and Allahabad districts. But the velocity of wind is very less, so we cannot fully rely and we cannot invest a heavy amount on this project. What are the challenges? The first challenge is inadequate wind speed. The second challenge is lack of grid infrastructure and storage facility. And the third challenge is it is very much costly and the expected output is very less. Okay, how we can, you can say that how we can suggest the required policy intervention. What we can suggest is strengthen the small hydro power development. Policy focus on the small hydro power projects like कि जैसे मान लो हमने कर दिया किसी रिवर बेसिन पे, like in the northwestern regions as well as in some areas of southern as well. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? वाटर इरिगेशन एज वेल एज एनर्जी इंटीग्रेशन. तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, तो वाटर के साथ इरिगेशन फैसिलिटीज प्लस एनर्जी इंटीग्रेशन हो जाएगा. ये दूसरा हम क्या कर सकते हैं? अनलॉक द विंड पोटेंशियल. हमें क्या करना पड़ेगा? जोनिंग करनी पड़ेगी, मतलब विंड मैपिंग एंड डेटा कलेक्शन. वी नीड a solid data mechanism where we can install the wind monitoring stations. We can also analyze in which month and which area have more wind velocity without any obstacle. ये सब करना है. Pilot projects in Bundelkhand, we can also install some pilot projects on Bundelkhand to assess the potential of wind energy in UP. Next one is land policy for wind farms. अगर भाई लैंड पॉलिसी को भी एक तरीके से लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा लैंड एक्विजिशन के लिए फॉर विंड फार्म इंस्टॉलेशन. These are also the challenge. Next one is the grid and storage infrastructure, because we all are know that we have decentralized power grids and we have not enough storage to store the whole wind potential. We have some financial issue like feed in the tariffs and viability gaps funding. हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें इंसेंटिव हो, जिसमें गवर्नमेंट प्रमोट कर सके एक तरीके से फाइनेंशियल, अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें लगाए तो, प्लस कुछ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट को भी कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोट्स
if the private player is investing their money, government also promotes some carbon credits as well. तो ये भी आपको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. इजी टू क्लियरेंस, इजी टू क्लियरेंस मतलब लैंड एक्विजिशन अच्छे से हो जाए, कोई एक तरह का डिस्प्यूट ना हो, इस तरह का कुछ आपको करना पड़ेगा. एंड लास्ट वन इज अवेयरनेस एंड फोकसिंग ऑन अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है. इनकरेज द लोकल कम्युनिटीज इन माइक्रो हाइड्रो एंड विंड कोऑपरेटिव्स में वो जाएं और कोऑपरेट करें और वर्क करें. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिकॉज इन दिस एरिया वी कैन नॉट हायर द person from outside. We trained and skilled very well the local peoples to reduce the employment requirement of the local peoples and also enhance the income of the local peoples. Conclusion में क्या कह सकते हैं कि while solar energy is dominating in UP, while solar energy is dominating, while solar energy is dominating in UP, because UP lies in tropics, but UP have a limited scope of hydro as well as wind potential, but UP needs to maximize its potential through some suggestions, some you can say suggestive measures. ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि while solar energy dominates UP's renewable capacity, small hydro and wind energy offer untapped and region specific potential. It can also helping to achieve the 100% supply of energy to all the humongous population which align in the state of UP. तो ये आप बातें कर सकते हैं. ठीक, ये आपका एक कंप्लीट आंसर हुआ. थैंक यू.